Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is leaching? What is the impact of leaching on soil fertility and plant growth, and how this leaching take place? So this is very important. If we study soil fertility, leaching is very important process. So what is leaching? Actually, leaching is the downward movement of nutrient along with water is leaching. So water move downward, then this process is percolation. If nutrients are there present in this percolating water, then this is leaching. So leaching is specific with nutrients. तो जो वाटर मूव करता है नीचे, पानी नीचे जाता है, उसको परकुलेशन कहते हैं. और इसके साथ जब न्यूट्रिएंट मूव कर जाते हैं बियॉन्ड द रूट जोन, नीचे चले जाते हैं, दैट इज नोन एज लीचिंग. सो व्हाई दिस प्रोसेस टेक प्लेस? सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इन सॉइल particles are present, micelles are present, and organic matter is present. So this micelle maybe sand, silt, clay. Organic matter is also present. Organic matter, we can say it is micelle, organic matter. So these are present. So mineral and organic matter present, and this organic matter and mineral carry negative charge. So negative charge are present on this micelle and organic matter. In organic matter, different type of acids are there: phenolic acid, carboxylic acid. So they produce a negative charge. Similarly, in clay particles, isomorphic substitutions are there. Some minerals produce the negative charge. So negative charge are present. So we can say soil is negatively charged, and some positive charge are also present on edges or on surface. But the positive charge are very less as compared to negative charge. So overall, soil is negatively charged. So we can say soil is anion, we can say, because it carry negative charge, and anions always attract the positive, that is cation. So it means this soil and organic matter, overall soil, will held positive ions by electrostatic force. Okay, and positive charges are ammonium, calcium, magnesium. There are many charges. Zinc, potassium, sodium, then copper. Many positive charges are there, and some charges are held by electrostatic force. So this type of this basic cations are held by electrostatic force, and this electrostatic force is just the bond between the positive and negative. So they share the electron equally. So this electrostatic bond is there between this and the soil particles. And the metallic cations, magnesium also, and metallic cations, copper, zinc, iron, aluminum, these actually make the coordinated bond, coordinated or covalent bond, coordinated or covalent. And this hydrogen also, hydrogen make the covalent bond, and these bond are stronger than electrostatic bond. तो अब cations जो हैं electrostatic bond से भी held हो सकते हैं और covalent और coordinated bond से, और ये जो bond है, these are more stronger than electrostatic bond. Electrostatic bonds are weak bond, so they break easily. And another is that these cations are in exchangeable form. So exchangeable form means if they are in solution, then it can replace from the clay particles, and the ion which are present now come into solution, and the ion which was present on solution now is present on clay particle. तो जब एक्सचेंज होता है तो सॉइल सॉल्यूशन में भी देखिए यहाँ पे भी है, और क्ले पार्टिकल पे भी, ऑर्गेनिक मैटर पे भी है. तो जब एक्सचेंज फॉर्म में होंगे तो ऑर्गेनिक मैटर क्ले से सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन वाला क्ले में चले जाएगा. इट मींस देयर इज ऑलवेज एक्सचेंज बिटवीन द आयन between the soil particles and the soil solution. So it means ions, positive ions, ammonium is present, calcium is present, magnesium, sodium, zinc, copper, many cations are present. Okay, potassium, calcium, magnesium, hydrogen also, aluminum. Okay, so these are the cations. Similarly, it carries some negative charge, and because of this negative charge, positive charge, so they held some anions like the nitrate. Nitrate is anion. Sulfate,
chloride, these are the anion, phosphates. But phosphates make insoluble compound with the aluminum phosphate, iron phosphate and calcium. So it has very insoluble compound with the iron, aluminum and the calcium as well as magnesium. But these are the insoluble compound, these are not exchangeable form, so they are fixed. तो फॉस्फेट के साथ तो फिक्स हो जाता है एल्युमिनियम या आयरन के साथ या कैल्शियम के साथ, वो एक्सचेंजेबल फॉर्म में नहीं रहता है. इन जनरल जो मोस्ट है वो किस में रहता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म. सो सम आर प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन आल्सो. सो दीज आर ऑन हेल्ड एंड सम आर प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल इन सॉइल सॉल्यूशन these negative ions are in soil solution because they are repelled by this negatively charge. So these anions are maximum in soil solution, present on clay particle also, soil particle we can say, don't be confused with the clay, soil, mycel, because mycel may be sand, silt or clay. Okay, so maybe on soil solution but on particle, but maximum in soil solution because they are repelled by this negatively charged. तो clay particle negative charge है, इन पे भी negatively charge है, repel हो जाते हैं, तो इस soil solution में mainly रहते हैं. तो for example in soil solution nitrate is there, sulfate, nitrate, sulfates, these are in soil solution. Chlorides, these are maximum amount in soil solution, very little amount, less amount on clay particle because positive charge are very less. Similarly, if this soil particles, this negative charge are saturated, then other cations remain in soil solution, potassium, calcium, magnesium, okay, maybe zinc, but these are coordinated bonds of very little amount. So mainly calcium, magnesium, potassium, sodium is beneficial element. So these ions are present in soil solution. Okay, so it means it is clear that ions are present in soil solution as well as on clay particle. अब ions कहाँ है, clay particle organic matter पे भी हैं और soil solution में भी हैं, लेकिन जो maximum cations हैं they are present on clay particle and maximum anions are present in soil solution and these are in exchangeable form. So suppose this calcium is in soil solution, it replaces this calcium which is present on clay particle. Now this come on soil solution. So these are in exchangeable form. So this exchangeable form is dynamic form. It is not static. So this process is continuous. So this is the situation. Okay. And suppose there is heavy rainfall or heavy irrigation. Then first pores are saturated with the water and there excess water means heavy rainfall. Rainfall is there. Then this water percolate through the pore space. The water is percolate through pore space. So this is the percolation process. But this percolation occur when there is a heavy rainfall or heavy irrigation beyond the water holding capacity of soil. बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा हम इरीगेट कर दें तो सैचुरेशन कैपेसिटी से, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से ऊपर निकल जाएगा, तो वाटर कहाँ करेगा, मूव करेगा. एंड देन बिकॉज दिस वाटर इज मूविंग विद द क्ले पार्टिकल्स and in it is actually soil solution. So this is the irrigation or heavy irrigation or heavy rainfall, then it move downward and it carry, this is the soil solution and soil solution ions are present. So it means it carry potassium, it carry nitrate, it carry sulfate, it carry calcium, it carry magnesium. So ions which are in soil solution, they move downward. Actually water is not moving, actually soil solution is moving downward. तो रेनफॉल इरिगेशन में जो सॉइल में पानी जा रहा है नीचे, वो सॉइल वाटर है क्योंकि सॉइल में जो भी आयंस हैं उनको मूव हो रहे हैं उसके साथ. तो जो भी होंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड, वॉट एवर आर प्रेजेंट, दे मूव डाउनवर्ड एंड दे मूव डाउनवर्ड सो मच दैट दे मूव बियॉन्ड द रूट जोन और नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग. सो लीचिंग इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस or we can say nutrients along with the percolating water or moving downward water. So leaching is the process in which nutrients move with the water into deeper layer. Okay, so now the soil is now is deficient in the nutrient because nutrients move downward with the percolating water. So there is a deficiency of nutrient. So deficiency is there, then plant will suffer from deficiency of nitrate. Nitrate is more prone to leaching because nitrate is always in soil solution. Sulfate leaching is there. Potassium leaching is also very common.
So maximum leaching is of anions because they are repelled. So this is the reason that maximum leaching of nitrate. तो जो नाइट्रेट है नेगेटिव है, सॉल्ट सॉल्यूशन में रहता है और अमाउंट भी ज़्यादा रहती है, तो ये सबसे ज़्यादा लीचिंग किसकी होगी? नाइट्रेट की होगी। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आएगी कहाँ? जहाँ हैवी रेनफॉल और इरिगेशन होगा वहाँ नाइट्रेट लीच कर जाएगा। तो इसी कारण से हमको क्या करना पड़ता है, जहाँ वाटर लॉक कंडीशन होती है वहाँ में ज़्यादा एक्सेस नाइट्रोजन देनी पड़ती है थ्रू फोलियर स्प्रे या टॉप ड्रेसिंग करके, क्योंकि ज़्यादा लॉस किसका हुआ है? नाइट्रेट का हुआ। तो नाइट्रेट इज मोर प्रोन टू लीचिंग बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन, मैक्सिमम अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट ऑन क्ले पार्टिकल और ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रेट की ज़्यादा लीचिंग क्यों होती है, क्योंकि वो रहता ही सॉइल सॉल्यूशन में, क्ले पार्टिकल पे रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्ले पार्टिकल पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इस पे दोनों रिपेल होते रहते हैं और सॉइल सॉल्यूशन में रहता है। इट इज नॉट लाइक दैट cations are not leached. The cations which are present in soil solution, they move downward with the water. So calcium leaching is there, magnesium leaching is there. In high rainfall area, this calcium magnesium leaching is very common. जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है कैल्शियम मैग्नीशियम की लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, सोडियम की भी लीचिंग होती है। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। And the other process that if leaching is not too much, then this water move for upward through capillary rise. So capillary rise is there, then this nutrient again come into root zone, then no problem. ये कैपिलरी वाटर के साथ फिर से ऊपर, अगर बहुत ज़्यादा लीचिंग है तो कैपिलरी वाटर के साथ ऊपर आ जाएंगे। बट इफ इट टू मच लीचिंग, टू डीप, देन इट दिस एंड डू नॉट कम इनटू थ्रू इनटू रूट जोन थ्रू कैपिलरी राइज। अगर बहुत ज़्यादा लीचिंग हो गई नीचे तो फिर कैपिलरी राइज के साथ ऊपर नहीं आ पाएंगे, एंड दैट्स वाई देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड, प्लांट ग्रोथ इज एडवर्सली अफेक्टेड। So in high rainfall area or heavy irrigation, this is the problem. There is a more leaching of nutrient deficiency, plant growth is poor plant height, poor grain yield. So this is the reason. So means in leaching, cation and anion both leach down, but the maximum amount is of anion which are negatively charged, particularly of nitrate. तो नाइट्रेट की लीचिंग सबसे ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा हम करेंगे तो जितने भी कैटायंस हैं वो भी जो सॉइल सॉल्यूशन वो भी लीच करने लगेंगे, और वो भी ज़्यादा लीच कर जाए तो जो एक्सचेंज फॉर्म में है वो भी वाटर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के हो जाएंगे, टूट जाएंगे वाटर के साथ, और वो फिर लीच करेंगे। सो दिस इज द रीजन दैट कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम लीचिंग इज मोर एज कंपेयर टू जिंक कॉपर एंड मैग्नीज, बिकॉज कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो दीज आर हेल्ड बाय electrostatic force, while zinc, copper, manganese are held by covalent or coordinated bond, and electrostatic bonds are weaker bond as compared to coordinated and covalent. So that's why there is a more leaching of calcium and magnesium, potassium, sodium as compared to zinc, manganese and copper, because these metallic cation make coordinated bond or covalent bond. तो अब जो मेटेलिक कैटायंस है वो तो कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म में है ऑर्गेनिक मैटर के साथ, क्ले पार्टिकल के साथ, तो टाइट बॉन्ड है, जल्दी से टूटते नहीं है, पार्टिकल पे ही रहते हैं, तो मूव नहीं करते नीचे वाटर के साथ। कैल्शियम मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होते हैं, वाटर में टूट जाते हैं, तो कैल्शियम कहाँ जाता है? सॉइल वाटर में जाता है, मैग्नीशियम में जाता है, इनकी लीचिंग हो जाती है। नाइट्रेट क्या है? ऑलरेडी सॉइल सॉल्यूशन में, क्योंकि वो रिपेल हो रहा है नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल, तो नाइट्रेट की लीचिंग हो जाती है। तो एनायंस आर मोर प्रोन टू लीचिंग, and cations which are held by electrostatic bond, they are prone to leaching. So this is the reason that more leaching of nitrate, sulfate and calcium, magnesium. तो नाइट्रेट सल्फेट की क्यों है? बिकॉज दे आर एनाइन एंड सॉइल सॉल्यूशन। कैल्शियम मैग्नीशियम की लीचिंग ज्यादा क्यों है? बिकॉज दीज आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दीज आर वीक फोर्स, और ये टूट जाते हैं, दैट्स वाई मोर लीचिंग। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। सो इन केस ऑफ लीचिंग, देयर इज लीचिंग, देन fertility is reduced. So that's why don't give over irrigation. ज़्यादा पानी नहीं देना। If there is a excess rainfall, then give the provision of drainage. तो excess rainfall होता है तो यहाँ drainage, give the provision of drainage, so percolating water will be very less, and we give the with the safe velocity, runoff with the safe velocity. So provide the drainage system in high rainfall area. Otherwise there may be leaching of the nutrients. So avoid the over irrigation in high rainfall area. Give the drainage system, maintain drainage system. So this is the process of leaching, and it is different with the percolation. Percolation is a downward movement of water, and if the nutrients are present in this water, then it is leaching. So definitely in 100% in soil solution, nutrients are present. So that's why leaching is there in heavy rainfall area and over irrigated area. So this is the process of leaching. Thank you very much.